So friends, Namaskar and welcome back to the CEV official YouTube channel. I'm Engineer Sandeep Bansal once again in front of you with one more knowledgeable and important video for your professional life. First of all, let me share my screen. This is a video in continuation with our previous video, that is what is family trust, and this video is on the topic how to value the family trust properties. And you can find this video on, you can find the details and theory of this video while login cvnews.in. When you click on cvnews.in, this screen will open. And after scrolling down, you will get in latest news, you will get this video. Here is the our today's presentation theory, that is family trust property valuation, a professional perspective on wealth protection. Let's click on this. When you click on this, this screen will open. So today's topic is family trust property valuation, a professional perspective on wealth protection and fiduciary responsibilities. So friends, before I start, I would like to welcome on behalf of CEV Group to all viewers of this video, and please for a new video on important topic, that is family trust property valuation. A new video on an informative topic. So please do not forget to like, comment, and subscribe the future post of CEV Group, that is and the official YouTube channel is Registered Valuers Club. Let's start our today's presentation. Family trust property valuation. It is prepared by me, Sandeep Bansal, for the Council of Engineers and Valuers, for valuers, estate planners, and trustees in India. So let's start with a quick recap of the presentation summary. The video presentation focused on valuation of family trust properties in India, covering the legal framework, fiduciary responsibilities, and importance of accurate property assessment for taxation and regulatory compliances. The discussion detailed various aspects of family trust, including their structure, components, and objectives, while explaining different types of trusts and necessity of professional property valuation throughout the trust life cycle. इस presentation में हम लोग discuss करेंगे detail various aspects of family trust, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे ट्रस्ट के, फैमिली ट्रस्ट के, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ प्रोफेशनल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थ्रू आउट द ट्रस्ट लाइफ साइकिल. कब कब उसको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है एक फैमिली ट्रस्ट को. प्रैक्टिकल केस स्टडी वर presented to demonstrate the application of valuation methods in different trust scenarios, emphasizing the crucial role of certified valuers in ensuring transparency, regulatory compliances, and tax efficiency for family trust in India. So in summary, we are discussing for the main video, the summary is here. The family trust property valuation, the video presentation part 2 of a series on family trust focuses on valuation of family trust properties from a professional perspective on wealth protection and fiduciary responsibilities. It aimed at estate planners, trustees, and valuers in India, building on the introduction of family trust covered in the previous video. The discussion emphasized the crucial role of accurate property valuation under trust for taxation, regulatory compliances, and maintaining fairness among beneficiaries, and references to the Indian Trust Act 1882.
Now, family trust in Indian law. The discussion focused on family trust in India, governing by the Indian Trust Act 1882, with outlined fiduciary duties of trustees to act as in beneficiaries' best interest, including obtaining professional valuation of trust property at appropriate intervals. The conversation highlighted the importance of family trust for modern wealth management, offering asset protection, succession planning, and tax efficiency, with a focus on the legal framework and compliance requirement under various acts. The discussion also covers the structure of family trust, including key components such as the settler, trustee, and beneficiaries, emphasizing the primary objectives of protecting family assets, ensuring wealth transfer across generations, and promoting tax efficiency and estate planning. So, family trust and property valuation. Friends, this is a video part 2. We have already uploaded a detailed presentation on the formation of family trust, meaning of family trust, what is the what are the formalities of creating a family trust. We have already uploaded a video number 1, and this is in continuation with video number 2. This is video number 2. Family trust and property valuation. The discussion explained the concept of trust, including the components like trustee, beneficiaries, and trust deed, which is a legal document defining objectives, asset management rules, and distribution structure. 4 types of family trust in India were outlined: private family trust, discretionary trust, revocable and irrevocable trust, and private discretionary trust. The necessity of property valuation for family trust was emphasized, highlighting its importance at various stages of a trust life cycle, including when transferring property into trust, supporting estate planning, and ensuring equitable division among beneficiaries upon termination. Family trust property valuation procedure. What is the procedure to be adopted to find out the value of the property? The discussion focused on procedures and requirement for valuing family trust property, including the appointment of certified valuers and documentation needed for assessment. The valuer must be registered with IBBI or professional body like CEV and similar bodies, and is responsible for physical inspecting the property while considering factors like condition, age, and location. The valuation reports must include property details, valuation details, methodologies, and the valuer's signature, with 3 approaches available: market approach, income approach, and cost approach. We will discuss this in the forthcoming presentation. What will we discuss along with this? Family trust property valuation guide. The discussion will be focused on property valuation methods for family trust, covering key factors such as location, neighborhood development, age, structural condition, legal status, and market comparables. We will also explain that certified valuers should be hired to inspect the property, gather required documents, and provide an official valuation report, detailed findings, and certified market value. The meeting will also highlight, today's meeting will also highlight key valuation parameters, including location attributes, neighborhood quality, infrastructure, size, condition, age, structure integrity, and comparable market data, while emphasizing the benefits of trust valuation for asset protection and succession planning. Now, family trust benefit and challenges. We will also discuss about the discussion will be focused on family trust, highlighting their advantages and challenges despite administrative complexities and costs. Family trust offer tax efficiency, preservation of family values, and intergenerational wealth management. The 5/5 rules. The 5/5 rule allow beneficiaries to withdraw a portion of the trust corpus annually, balancing liquidity and asset preservation. While there is no statutory
minimum corpus required to establish a family trust. Practical viability suggests a financial meaningful asset base to justify administrative costs. As India's high net worth families increasingly adopt trust structure for wealth protection, professional valuers play a crucial role in ensuring transparency, accountability, and marketing integrity. Now, family trust valuation case study. We will also discuss certain case studies in today's presentation in the forthcoming slides. The meeting will discuss practical case study on family trust property valuation, focusing on 3 examples. The first case involved valuing a residential property transfer into a family trust in Bangalore, requiring an assessment for stamp duty and trust accounting purposes. That will be the case study number 1. And in the second case addressed a dispute between siblings over a commercial shop in Pune, where both income and market approaches are applied to determine fair valuation. And the third case studied the dissolution of a family trust in Gujarat holding agricultural land, requiring equitable distribution among beneficiaries. The discussion highlighted the importance of professional valuation expertise in family trust matters, emphasizing the role of certified valuers in ensuring transparency, regulatory compliances, and tax efficiency while preventing disputes. So this is the basic highlight and summary of a quick recap of our presentation. Let's start our main presentation with introduction. So friends, namaskar and good day. So friends, welcome back. I am in front of you for one more knowledgeable video related to our profession. And the topic of today's video and today's presentation is family trust property valuation. How to value a property related to family trust. A professional perspective on wealth protection and fiduciary responsibility. So let's discuss about this very important topic related to property valuation of family trust. So before we start, I would like to welcome you to watch this video on behalf of CEV Group. We welcome you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe the official YouTube channel of CEV Group, that is Registered Valuers Club. Here is one new video presentation on an informative topic. So let's start our today's topic. That is family trust property valuation, that is compiled by CEV Group. Family trust property valuation, a professional perspective on wealth protection and fiduciary responsibility. This topic is prepared by me for Council of Engineers and Valuers, for valuers, estate planners, trustees in India. So let's start our today's presentation. About introduction of family trust. The valuation of family trust property has emerged as a critical component of wealth management, estate planning, and fiduciary governance in India. We have already made one video related to this in part 1, and this video is in continuation of that previous video. This video will be the part 2 of in continuity of the previous video. That video was related to
proper introduction, the formal introduction of what is meant by a family trust and how it is created. In this video, we will discuss about the valuation aspect of family trust. But in introduction, let's continue with some important topics we have already covered in the previous video number 1. The valuation of family trust property has emerged as a critical component of wealth management, estate planning, and fiduciary governance in India. In a dynamic legal and economic environment, determining the accurate market value of asset held under a trust is essential not only for taxation and regulatory compliance, but also for maintaining transparency and fairness among beneficiaries. The Indian Trust Act 1882, जितने भी इंडिया के अंदर ट्रस्ट हैं सभी इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर आते हैं. It provides, it is governed by all the trusts in India are governed by the Indian Trust Act 1882. It provides the legal framework for the creation and management of private trusts, including family trust. Under this act, the trustee bears a fiduciary duty to act in the best interest of the beneficiaries. Trustee bears the duty to act in the best interest of the beneficiaries, which includes obtaining a professional valuation of the trust property at appropriate intervals. देखिए ट्रस्टी की ड्यूटी है कि वो बेनिफिशियरीज के इंटरेस्ट में काम करे, उसकी ड्यूटी यही है. And which includes obtaining a professional valuation for the trust property at appropriate intervals. At appropriate intervals, उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लेना जरूरी हो जाता है. Family trusts have become a vital component of modern wealth management in India, offering structured asset protection, succession planning, and tax efficiency. As the number of high net worth families and complex asset portfolio increases, so does the need of accurate and certified valuation of trust property. Valuation is not merely a financial exercise, it is a fiduciary responsibility essential for compliance under the Indian Trust Act 1882 and the Income Tax Act, and where applicable, the Companies Act under IBBI regulations. तो किस किस पर्पस के लिए वैल्यूएशन करानी पड़ती है? It is not a merely financial exercise. It is a fiduciary responsibility also. It is essential for compliance under Indian Trust Act 1882 के अंडर आपको वैल्यूएशन करानी जरूरी है एज अ रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी. इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है, एंड कभी कभी कंपनीज एक्ट अंडर आईबीबीआई रेगुलेशंस के अंदर आपको जरूरत पड़ सकती है. दिस आर्टिकल offers comprehensive insight into family trust valuation accompanied by practical case studies that illustrate real world valuation methodologies and challenges. First of all, we will understand the valuation process of family trust. Then we will take up some one, two or three case studies in the end to understand the basic concept, how to value as a valuer. So first of all, we will try to understand in short, in continuation of the video number 1, this is video number 2, what is meant by a family trust. Understanding family trust. A family trust is a private arrangement established to manage and process and protect asset for the benefit of specific family members or future generations. So it is a private arrangement established to manage and protect assets for benefit of specific family members और फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशंस के लिए और स्पेसिफिक फैमिली मेंबर्स के बेनिफिट के लिए इसको एस्टैब्लिश किया जाता है फैमिली ट्रस्ट को. इट एंश्योर्स orderly wealth distribution, asset protection, and continuity of family values. The key legal fundamentals lies in the Indian Trust Act 1882,
complemented by relevant provisions under the Income Tax Act for taxation and reporting. तो दो एक्ट यहां पर मेन जरूरी हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इसके अंदर ट्रस्ट फॉर्मेशन होती है, और इनकम टैक्स एक्ट इसके अंदर उसकी टैक्सेशन होती है। तो दोनों एक्ट हम साथ साथ में इसको स्टडी करेंगे। इससे ट्रस्ट के रिलेटेड जितने रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो हम स्टडी करेंगे फैमिली ट्रस्ट के रिलेटेड। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फैमिली ट्रस्ट, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली ट्रस्ट? Protecting family assets from legal claims and external liabilities. That is the most important point. Protecting family assets from legal claims and external liabilities. Ensuring structured wealth transfer across generations. Supporting dependents through disciplined asset management. And promoting tax efficiency and estate planning. There are four major primary objectives of creating a family trust. Structure of a family trust. अब स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए? There are, in a typical family trust involves following key components. There are 5 key components in a family trust, as we have already discussed in video number 1. One is settler, the person who creates the trust and transfer asset into it. सेटलर उसको कहते हैं जिसकी प्रॉपर्टी होती है और जो अपनी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट में ट्रांसफर करता है और जो उस ट्रस्ट को क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड सेटलर. इन टेक्निकल वर्ड्स इट इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड एज सेटलर हु क्रिएट्स द ट्रस्ट एंड ट्रांसफर एसेट्स इनटू इट. ट्रस्टी, the individual or institution responsible for managing the assets in accordance with the trust deed. अब ट्रस्ट डीड में ट्रस्टीज को क्या क्या ड्यूटीज दी गई हैं ये ट्रस्ट डीड के अंदर होता है, लेकिन एक ट्रस्टी जो होता है, ही इज अ इंडिविजुअल, ही कैन बी अ इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एसेट्स इन अकॉर्डेंस विद द ट्रस्ट डीड. अब ट्रस्ट डीड के जो जो क्लॉजेज हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रस्टी की ड्यूटी है उसको मैनेज करना. And trustee can be an individual and an institution also. Now, beneficiaries. The family members entitled to receive benefits from the trust. Basically, trust is created for the benefit of beneficiaries only. And trustee is the custodian who look after the interest of the beneficiaries. In short, you may remember this. Now, trust deed. The legal document defining the trust objectives, asset management rules, and distribution structure. What is trust deed? A legal document defining the trust objectives, जो trust के objectives define करता है, asset management rules decide करता है, और distribution structure, अब उसका जो benefit होगा वो कैसे कैसे beneficiaries में distribute होगा वो ट्रस्ट डीड के अंदर सारा मेंशन होता है. इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. ट्रस्ट प्रॉपर्टी, द कॉर्पस ऑफ एसेट, मूवेबल और इमूवेबल, फॉर्मिंग द ट्रस्ट फाइनेंशियल बेस. अब सेटलर ने क्या क्या एसेट्स ट्रस्ट को दिए हैं? इट कैन बी मूवेबल, इट कैन बी इमूवेबल ऑल्सो, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस ऑफ एसेट्स. इट इज it forms the trust financial base. Now, type of family trust. We will discuss a type of family trust in short, as we have already discussed this topic in detail in video number 1. But for continuation, we will discuss all these things in short. Now, there are 4 types of family trust in India: private family trust, discretionary trust, revocable and irrevocable trust, and private discretionary trust. Now, private family trust, created to benefit identified family members with the trust deed defining their respective shares and entitlements. Private family trust. It is created to benefit identified family members with a trust deed explicitly defining other respective shares and entitlements.
Now, discretionary trust. Here, the trustee exercises discretion in determining how and when the beneficiary receive distributions, offering flexibility of diverse family needs. That is called discretionary trust. Now, revocable and irrevocable trusts. Revocable trust. The settlor retains the right to modify or dissolve the trust. Irrevocable trust, once established, it cannot be altered by the settlor, thereby providing enhanced asset protection and tax benefits. दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, एक रिवोकेबल, एक इरिवोकेबल फैमिली ट्रस्ट्स। रिवोकेबल ट्रस्ट में सेटलर के पास राइट होता है, वो कभी भी उसको मॉडिफाई कर सकता है या डिसॉल्व कर सकता है उस ट्रस्ट को। इरिवोकेबल ट्रस्ट में क्या होता है कि अगर वो एक बार बन जाता है, एक बार ट्रस्ट डीड रजिस्टर हो जाती है, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द सेटलर। सेटलर भी उसको अल्टर नहीं कर सकता, thereby providing enhanced asset protection and tax benefits। उसमें बार बार उसको मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहता है फॉर एसेट प्रोटेक्शन एंड टैक्स बेनिफिट। उसमें पता होता है कि क्या करना है और ये कन्फाइंड है कि ये ही करना है, बार बार उसको चेंज नहीं किया जा सकता। नाउ, प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। A blend of private and discretionary features where trustees can decide on distribution patterns, making it suitable for complex or high net worth family structures. This is also a type of family trust. It is a mixture of private and discretionary trust. Now, necessity of family trust property valuation. अब फैमिली ट्रस्ट तो बन गया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ वैल्यूअर, कि आपके पास आदमी क्यों आएगा वैल्यूएशन कराने के लिए। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय वैल्यूअर्स, एंड फॉर नॉर्मल पर्संस, उनके लिए भी ये जरूरी है कि फैमिली ट्रस्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्यों जरूरी है और कब कब जरूरी है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। Professional valuation is essential at multiple stages of a trust life cycle. The following scenarios highlight the necessity and timing of valuation exercises. कब कब valuation की जरूरत पड़ सकती है, ये आपको एज अ फैमिली ट्रस्ट, आपके अगर अपनी फैमिली ट्रस्ट है तो जानना जरूरी है, अगर एज अ वैल्यूअर है तब भी आपको जानना जरूरी है कब कब आपकी जरूरत एक फैमिली ट्रस्ट की वैल्यूएशन के लिए ट्रस्टीज को पड़ सकती है। Transforming property into the trust. Transferring properties into the trust. जब ट्रस्ट बनती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जब उसको ट्रस्ट में ट्रांसफर करना होता है, उस वक्त उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जरूरी होती है। When the settler transfer asset into the trust, an independent valuation establishes fair market value for stamp duty and legal compliances. बहुत जरूरी है, जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इनटू द ट्रस्ट होता है तो स्टैम्प ड्यूटी पर्पस के लिए और लीगल कॉम्प्लायंसेस के लिए एक उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराना, फेयर मार्केट वैल्यू कराना बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, एस्टेट प्लानिंग। वैल्यूएशन सपोर्ट स्ट्रेटेजिक टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग, ensuring transparency and fairness in future distribution। जब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, उस वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है एस्टेट प्लानिंग पर्पस के लिए, टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक टैक्स एंड एस्टेट प्लानिंग, ensuring ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉपर वैल्यूएशन होगी ट्रस्टीज के पास तो उनको आसानी होगी उसकी जो इनकम है या उसकी जो आउटपुट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसकी टैक्स लायबिलिटी जो भी होगी वो भी उनको एक्यूरेट नॉलेज में होगी। In case of dissolving the trust, third purpose is, in case the trustees want to dissolve the trust upon termination,
if there is a clause in the trust that it is to be terminated at that moment or after certain years or after a certain period or after completion of its objectives, then upon termination, an updated valuation ensures equitable division among beneficiaries, preventing disputes and litigation. At the time of dissolving, आपको as a valuer अपॉइंट किया जा सकता है टू एंश्योर इक्विटेबल डिवीजन, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू करने के लिए, अपडेटेड वैल्यूएशन देने के लिए कि उसके बराबर बराबर हर एक में इक्वल प्रोपोर्शन के हिसाब से जो ट्रस्ट डीड में मेंशन है बेनिफिशरीज को, उसके हिसाब से उसकी डिवीजन हो जाए एंड it will prevent the disputes and litigation. Now, selling trust property. Before sale, a valuation determines the market value, which become crucial for capital gain calculation. In case trust want to sell some property, then before sale, valuation is necessary, valuation is must to determine the market value, which become crucial for capital gains. ये टैक्सेशन पर्पस के लिए जो भी उसकी कैलकुलेशन होगी उसके लिए वैल्यूएशन बहुत जरूरी है. Now, refinancing and buyout situation. When beneficiary wishes to buy another share, valuation guarantees that the transaction reflects fair market value. If some out of the beneficiaries someone want to buy another share, then a fair market value is needed, and that will the valuation will be the guarantee that the transaction reflects fair market value और उनका proper distribution of income हो सके. Now, authority to conduct valuation. Now, who can conduct the valuation of family trust? Valuation of trust property must be conducted by independent certified professionals to ensure impartiality and compliance. Now, registered valuer. Professional recognized under the company's registered valuers and valuation rules 2017. As per the company's registered valuers and valuation rules 2017, only valuers registered with IBBI, Insolvency and Bankruptcy of India can undertake such assignments for regulatory or financial reporting purposes. If it is a company and the property belongs to a company, then only registered valuers are authorized to do this valuation, and only such assignments for and only these valuers can undertake such assignments for regulatory or financial reporting purposes. Now, government approved bodies. In certain cases, government agencies may be authorized to issue valuation certificate, particularly when trust assets include public or quasi-public property. Chartered engineers and valuers. Members of professional bodies such as Council of Engineers and Valuers, CEV, and other similar organizations play a significant role in providing technically sound, legally compliant valuation reports recognized by judicial and financial institutions. In case of any litigation, the valuation may also be required by the relevant order of the court. Then you need to provide the valuation of that particular trust. Procedure for family trust property valuation. Now, what are the steps to be taken if anyone want to get the valuation of the property of the family trust? Point number one will be the appointment of a certified valuer. The trustee must appoint a qualified professional verifying credentials through official registers of professional bodies such as CEV and similar organizations or IBBI. The credentials of the valuer must be verified that he is authorized to do this valuation or not, if he is appointed to do the valuation of a family trust, property of a family trust. Also, it depends on the type of asset classes. If it is a land and building, then land and building valuer, otherwise plant and machinery, or if some intangible assets are there, then a SFA valuer is to be appointed.
collection of documentation. What are the documents to be collected by the valuer, and what are the documents to be handed to the valuer by the trustee? These are essential documents include title deed and property ownership records. Number one, title deed and property ownership records, as well as the trust deed also required for this. Next is approved building plans and layouts. If the property is immovable property and building is constructed, then approved building plans and layouts are also required. Municipal tax receipts are required. If the property is within the limit of the municipality or corporation, then proper tax receipts are required. Then encumbrance certificate required. Then past valuation report, if any. If it is in continuity, then previous valuation report is to be the part and parcel of the documentation. Then trust deed, which will clear the clauses affecting ownership. Trust deed is very, very important, and title deeds and property ownership records is also important. Now, physical inspection. After getting the appointment and collection of the documents, the valuer need to inspect the property physically. The valuer inspect the property to assess condition, age, area, location attributes affecting market value. Various parameters are to be recorded by the professional valuer, qualified valuer, which includes property to assess conditions, age, area, location, which affects the market. Now, valuation report preparation. A certified valuer is issued valuation certificate containing property identification details, valuation date, methodology is applied, current fair market value, certificate, and signature of the value. These are the part and parcel of the valuation reports. Now, application of valuation method. What are the method to be applied for finding out the valuation of a family trust? There are three approaches. Market approach, sale comparison method is to be used for if you are calculating the value by income approach, then rent capitalization or discounted DCF method is to be used. If cost approach, then depreciated replacement cost is to be used. Now, after that, step number 6 is to issue the valuation certificate, issue of certified valuation report. The formal report with FMV methodologies, assumptions, and the valuer certificate are to be issued. The key factors influencing trust property valuations. What are the key factors which influence the ट्रस्ट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन? क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए और जो इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ विजिट टू द प्रॉपर्टी? लोकेशन एंड नेबरहुड डेवलपमेंट. Like any other immovable property, you have to identify the location and neighborhood development. Age and structural condition, legal status and encumbrances, market comparables. If you are doing the valuation by using market approach, then market comparables are very much necessary. Real estate trends in the nearby vicinity. What are the real estate trends in that particular area or in that city or in that particular location? Income potential, if rented, if you have to do the valuation by using the income approach, then income potential is very much important. Urban versus rural land classification. If it is in urban, what are the parameters? If it is situated in rural land, then what are the parameters to be understood? There are various videos available on CV website as well as on YouTube channel, which will guide you to complete your valuation by using different methods. Each and every approach is also discussed there with proper case studies and a lot of examples. You can take benefit of this. And now property valuation for a family trust.
क्या क्या स्टेप्स होंगे, यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया गया है। सबसे पहले एक सर्टिफाइड वैल्यूअर हायर किया जाएगा। सर्च for a government approved or certified professional specializing in property valuation. It may be land and building valuer, plant and machinery valuer, or SFA valuer, depending upon the number and type of assets involved in that particular property, in that family trust. Now, gather required documents. Required documents are a property deed, building plan, tax receipt, receipt, trust deed is also important, encumbrance certificates. Schedule a property inspection. A valuer will physically inspect the property to assess its condition, age, size, and location, then receive the valuation report. The valuer will provide an official valuation report detailing their findings and certifying the current market value and review the valuation certificate. After receiving the valuation report, the trustee may review the valuation certificate. If they found any discrepancy or anything not included in that particular report, then they may contact the a particular valuer for review its certificate. Now, key valuation parameters. What are the key valuation parameters? Valuers analyze both physical and economic aspect of the property. Location attributes, neighborhood quality, infrastructure, and proximity of civic amenities. These are to be identified and properly inspected and properly verified at the time of inspection. These parameters are very important: neighborhood quality, infrastructure, and proximity to civic amenities. In any land and building valuation, these parameters are important. Size and condition, age of the building, structure integrity, what are the structural condition of the building, and built up area. These are to be studied and recorded and noted and verified at the time of visit. Comparable market data. Recent sale transactions of nearby vicinity of similar properties in the area. That is very important at the time of visit. You need to record all these data. Then prevailing market trends, real estate cycles, interest rates, and economic indicators. These can be worked out in your office also by taking the help of various parameters and various websites and various data available on internet. So these are the key valuation parameters to be noted down. Benefits of establishing and valuing a family trust. Asset protection, we have already discussed. Safeguard asset from creditors, legal disputes, or business risk. Succession planning, ensure smooth transfer of wealth without probate complexities. Tax efficiency, optimize income and estate tax liability through strategic structuring. We have already discussed these topics in our previous video, video number 1. This is video number 2. But in continuity, we are discussing some key topics in short. Then preservation of family values. Enable intergenerational wealth management aligned with family ethics and intentions. अगर आप फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करेंगे तो सभी फैमिली मेंबर्स एक इंटीग्रिटी के साथ आपस में मिलजुल के रहना पसंद करेंगे और उनमें कोई लीगल डिस्प्यूट्स या लिटिगेशन मैटर्स आप अवॉइड कर सकते हैं. And it will also provide transparency. Challenges and limitations. So what are the challenges and limitations of family trust? Despite the advantages family trust involve, administrative complexity requires professional management and compliance monitoring. No doubt, if it is a trust, then it will require a professional management and compliance monitoring, regular compliance monitoring by the trustees. Initial and ongoing cost. Legal registration and valuation expenses. These are to be these can be the additional charges to be bear. Then regulatory compliances, adherence of taxation norms and the minimum marginal rate (MMR), for certain income distributions. You have to
take care of the minimum marginal rate, that is called MMR for certain income distribution. उसमें minimum marginal rate कितना होना चाहिए ये आपको consider करना पड़ेगा. Now we will discuss the minimum value concept also, MMR, the 5 by 5 rule and minimum value concept. A unique provision in trust management is the 5 by 5 rule, which allows beneficiaries to withdraw the greater of 5,000 or 5% of the trust corpus annually, balancing liquidity and asset preservations. 5 by 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मिनिमम वैल्यू कॉन्सेप्ट है. इसमें 5 by 5 रूल के अंदर क्या है, बेनिफिशरीज, दिस अलाउ बेनिफिशरीज टू विड्रॉ the greater of 5,000, either 5,000 or 5% of the trust corpus. इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो विड्रॉ कर सकते हैं. बैलेंसिंग लिक्विडिटी, इससे क्या होगा, लिक्विडिटी भी बनी रहेगी और एसेट प्रिजर्वेशन भी बनता रहेगा. इससे ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होने के बाद उसमें लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है या एसेट में उसका डिक्लाइनेशन शुरू हो सकता है. देयर इज नो स्टैट्यूटरी मिनिमम कॉर्पस रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ फैमिली ट्रस्ट. अब फैमिली ट्रस्ट बनाने के लिए कोई मिनिमम कॉर्पस नहीं चाहिए. आप किसी भी अमाउंट से, किसी भी प्रॉपर्टी से, कितनी भी प्रॉपर्टी से, कहीं भी प्रॉपर्टी से, कहीं भी लोकेटेड है वो प्रॉपर्टी, उसको फैमिली ट्रस्ट को शुरू कर सकते हैं. उसमें कोई मिनिमम कॉर्पस की कंपल्शन नहीं है. हाउएवर, प्रैक्टिकल वायबिलिटी सजेस्ट अ फाइनेंशियल मीनिंगफुल एसेट बेस टू जस्टिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. देखिए, जब आप फैमिली ट्रस्ट बनाएंगे तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी, उसमें जो ट्रस्टीज होंगे या दूसरे एक्सपेंसेस होंगे ट्रस्ट को मेंटेन करने में, ट्रस्ट डीड रजिस्टर कराने में, उसके बाद उसके टैक्स रिटर्न भरने में, पैन कार्ड बनवाने में, देयर आर सो मेनी लायबिलिटीज. उसके बाद उसका ऑडिट कराने के लिए, या फिर अगर ट्रस्ट कमिश्नर से कोई उसका आगे फर्दर कोई इम्प्लीकेशन है, स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अलग अलग एक्ट्स हैं. अगर उसमें कहीं लेकिन फिर इसलिए उसमें अगर एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट होगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को जस्टिफाई आप कर सकते हैं. सो प्रैक्टिकल वायबिलिटीज सजेस्ट अ फाइनेंशियल मीनिंगफुल एसेट बेस. तो इसलिए मिनिमम एसेट बेस होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल वायबिलिटी तभी हो पाएगी और टू जस्टिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. नाउ, in an era of evolving wealth management strategies, family trust property valuation stands at the crossroad of legal compliances, financial planning, and ethical stewardship. For trustees, beneficiaries, and professional valuers, a well-documented independent valuation is not merely a statutory formality, but cornerstone of trust governance and intergenerational equality. As India's high net worth family increasingly adopt trust structures for wealth protection, professional valuers, particularly those registered under CEV and similar organizations, and IBBI, who are registered valuers under IBBI, they can play a pivotal role in ensuring transparency, accountability, and market integrity. So now we will discuss some practical studies, case studies, how valuation works in real life, how to value the family trust property in real life. We will discuss 3 case studies. Below are 3 detailed examples illustrating how valuers conduct family trust valuation assignments. So we will discuss 3 टिपिकल केस स्टडीज जो कि मोस्ट कॉमनली जिस तरह का आपके पास वैल्यूएशन करने के लिए आ सकता है. वी विल डिस्कस 3 टाइप ऑफ केस स्टडीज. उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई किसी तरह का असाइनमेंट आता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर्स प्रोवाइडेड ऑन द official website of CEV, that is 9041263607, for any help and support during your practical problem or during your practical professional work. Now, case study 1.
Valuation of a residential property transferred into a family trust. What is the background? A settler in Bengaluru transferred his 2,400 square foot residential house into the Kumar family trust. The trust must record FMV for stamp duty and trust accounting. देखिए, मोस्टली आपके पास जो केस आएंगे वो तीन यहां पर केस स्टडीज दी गई हैं, इन तीनों में से मिलता जुलता ही कोई केस आएगा ट्रस्ट की वैल्यूएशन करने के लिए फॉर फैमिली ट्रस्ट। तो उसमें एक एग्जाम्पल जो मोस्टली कॉमन एग्जाम्पल है, जो आपके पास काफी फ्रिक्वेंटली इस तरह का केस आ सकता है, या इस तरह के पर्टिकुलर ट्रस्ट के ट्रस्टीज को जरूरत पड़ सकती है एक प्रोफेशनल वैल्यूअर की। अ सेटलर नेम मिस्टर कुमार, लेट इट बी, एक मिस्टर कुमार हैं, वो बेंगलुरु में रहते हैं। उन्होंने अपनी 2400 स्क्वायर फुट की रेसिडेंशियल हाउस है जिसमें वो रह रहे हैं, उन्होंने एक कुमार फैमिली ट्रस्ट बनाया है, जो कि उसके कुछ उसमें उन्होंने ट्रस्ट के बेनिफिशरीज कुछ रखे हैं, और उनके बेनिफिशरीज को कैसे कैसे उनका ट्रांसफर होना है प्रॉफिट, वो उन्होंने सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। एंड द ट्रस्टी मस्ट रिकॉर्ड एफएमवी फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड ट्रस्ट अकाउंटिंग। अब ट्रस्ट अकाउंटिंग के लिए और स्टैम्प ड्यूटी फाइंड आउट करने के लिए उनको वैल्यूएशन की जरूरत है। तो हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे? 24 स्क्वायर फीट का उनका रेसिडेंशियल हाउस है, इट इज नॉट अ कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल हाउस है। कितना एरिया है? 2400 स्क्वायर फीट है। कहां पर लोकेटेड है? बेंगलुरु। किस नाम से ट्रस्ट है? कुमार फैमिली ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर होना है, और स्टैम्प ड्यूटी और ट्रस्ट अकाउंटिंग पर्पस के लिए आपको वैल्यूएशन करना है, या वैल्यूएशन ट्रस्टीज को चाहिए। ना वैल्यूएशन स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होंगे वैल्यूएशन के? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सबसे पहले वैल्यूअर को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। टाइटल डीड कंफर्म इन द सेटलर्स नेम। जो ट्रस्ट में सेटलर है, जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे रहा है, मिस्टर कुमार, टू क्रिएट अ ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट इन द नेम ऑफ कुमार फैमिली ट्रस्ट, उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम से ही होनी चाहिए। ट्रस्ट डीड कंफर्म्ड इन द सेटलर्स नेम, सेटलर नेम के नाम से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो किसी और के नाम से और ट्रस्ट में देना चाहते हैं। ये आपको एज अ वैल्यूअर कंफर्म करना है। अप्रूव्ड बीबी एमपी प्लान वेरीफाइड। बीबीएमपी यहां पर क्योंकि बेंगलुरु में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो बेंगलोर के म्यूनिसिपल जो रूल्स होंगे वो यहाँ पर उसमें एरिया में लगेंगे, तो वो आपको अप्रूव्ड मैप उसका चाहिए। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट 13 ईयर्स शोइंग नो चार्ज, आपको 13 साल का एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आप उनके लीगल एडवाइजर से आप ले सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं कि एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का आप निकाल कर दीजिए। देन ट्रस्ट डीड स्टेट्स रिवोकेबल ट्रस्ट, द ट्रस्ट डीड स्टेट्स आर रिवोकेबल ट्रस्ट, इट इज अ रिवोकेबल ट्रस्ट। हमने टाइप्स पहले पढ़ी थी। इट इज अ रिवोकेबल ट्रस्ट, इट कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय द सेटलर। टाइप ऑफ ट्रस्ट आपको यहां पर ट्रस्ट डीड पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, इट इज अ रिवोकेबल ट्रस्ट। एंड नाउ व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द फिजिकल इंस्पेक्शन? अब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, अब फिजिकल इंस्पेक्शन हमने करना है। बिल्ट अप एरिया इज 2400, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, given in the question, or given in the background of the trust. Age is 12 years. Condition good. Minor repairs. Location Indiranagar, a high demand residential zone. These are the given parameters. When you visit the property, these are the parameters which you find out, which you have recorded during your physical inspection. Now, valuation method. Market approach. Comparable sale data. Recent comparable transaction क्या क्या है? Because it is a residential property. Now we are having 3 comparable sale transaction at the time of physical inspection. The valuer has noted the 3 comparable sale instances. Number 1 is 6.25 crore का सेल प्राइस हुआ है, और 5% बिकॉज इट इज अ बेटर लोकेशन। एडजस्टमेंट हमें करना है +5% क्योंकि बेटर लोकेशन है। बी इज
5.8 करोड़ का सेल हुआ है। इट इज अ स्मॉलर एरिया, -3% इसमें एडजस्टमेंट करेंगे बिकॉज इट वॉज अ स्मॉलर एरिया। सी 6.10, इट इज अ इक्वलेंट एरिया, तो इसमें कोई हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 में +5% करेंगे फॉर बेटर लोकेशन, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बेटर लोकेशन में है। बी 5.8 करोड़ है, तो हम इसमें -3% करेंगे बिकॉज इट इज स्मॉलर एरिया। एंड सी हमारे प्रॉपर्टी के बराबर है और हमारी प्रॉपर्टी के जैसा ही है, तो उसमें हम कोई निल एडजस्टमेंट करेंगे। देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स आल्सो फॉर कंपेरेबल सेल्स मेथड। कंपेरेबल सेल मेथड के ऊपर एक इंडिपेंडेंट एक हमारा प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो उसमें डिटेल में केस स्टडीज, उसमें 12-13 केस स्टडीज हैं, और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या किस किस तरह से हम करते हैं। इन शॉर्ट वी आर डूइंग हियर इन शॉर्ट। बाकी डिटेल में ईच एंड एवरी वैल्यूअर नो हाउ टू डू the valuation by using the market approach and using the method of comparable sale method. In short, we are discussing the few parameters only to limit our discussion. Adjustment average FMV आता है, डिफरेंट टर्म पैरामीटर्स यहाँ पर सारा डिस्कस करने के बाद जो एवरेज FMV आएगा 6.15 करोड़ आएगा। देन सर्टिफाइड FMV इशूड is 6.15 crore, rupees 6 crore and 15 lakhs only outcome. The value is recorded at the trust opening asset value and used for stamp duty and future capital gains calculations. What was the purpose? Purpose of the valuation is stamp duty and trust accounting. अब दोनों पर्पस यहां पर सॉल्व होंगे उनके वैल्यूएशन कराने के बाद। is recorded as the trust opening asset value. This will be the opening asset value. Opening asset value of the property. It is used for stamp duty and stamp duty payment for revenue purposes and future capital gains calculation के लिए भी आपको यही वैल्यू आगे काम में आएगी। Sorry. Now case number 2. Case study number 2. Valuation for payout between beneficiaries. अब बेनिफिशियरीज के बीच में कोई ट्रस्ट में आपस में डिवीजन होना है, तो वो उसको उसकी वैल्यूएशंस कैसे करेंगे। बैकग्राउंड: टू siblings inherit equal beneficial interest under a family trust containing a commercial shop in Pune. One sibling wishes to buy out the other. अब देखिए, दो ब्रदर हैं या एक ब्रदर एक सिस्टर है या फिर दो इक्वल बेनिफिशरीज हैं, उनका एक फैमिली ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है और एक कमर्शियल शॉप है पूना में। अब उनमें से दोनों शॉप को डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ सिंगल प्रॉपर्टी। तो उसमें उन दोनों में डिवाइड करना है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, उनमें से एक आदमी अपना हिस्सा दूसरे को बेच दे या एक आदमी अब दूसरे का हिस्सा खुद खरीद ले। तो उसको कैसे करेंगे, किस तरह उसको डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे टू फाइंड। जब भी डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यूएशन तो चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी की कीमत पता होगी, तभी वो आपस में डिवाइड कर पाएंगे। से एक आदमी अपना हिस्सा दूसरे आदमी को सेल कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। Valuation challenges. The shop generates monthly rent 85,000 and located in a high footfall commercial area. This is the background of the property. 85,000 उसका monthly rent आ रहा है and is located in a high footfall commercial area. बहुत अच्छी commercial area में property located. Valuation approach. Both the income approach and market approach were applied and the weighted average was taken. अब यहां पर मार्केट अप्रोच और इनकम अप्रोच दोनों ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाई income approach is used and why market approach is used and how to use the income approach for rent capitalization method. क्योंकि 85,000 उसको रेंट आ रहा है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि उनका इनकम अप्रोच हमें वहां से कैलकुलेट करना है। एनुअल रेंट 85,000 आ रहा है, 12 महीने का आएगा 10,20,000। मार्केट डिराइव्ड यील्ड इन द लोकेलिटी, जो कि आप डिफरेंट सोर्सेज से सर्च करेंगे और आपके पास उसका एविडेंस भी होना चाहिए, दैट इज अराउंड 6.5%।
FMV is equal to annual rent divided by yield. 10,20,000 divided by 0.065 is equal to 1.57 crore. सो एफएमबी इनकम अप्रोच से कैसे आएगा? एनुअल रेंट जितना होगा उसका डिवाइडेड बाय यील्ड आएगा, मार्केट यील्ड इज इक्वल टू 1.5 करोड़। ये हमारा इनकम अप्रोच से उसकी वैल्यूएशन आ गई बेस्ड अपॉन द रेंट जो शॉप से आ रहा है 85,000। नाउ मार्केट अप्रोच से किस तरह करेंगे? उसका सेल कंपैरिजन हमें निकालना पड़ेगा, कंपेरेबल सेल इंस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। वहां पर हमने 3 शॉप्स का देखा सेल कंपैरिजन, क्योंकि ऑलमोस्ट शॉप सभी एक ही तरह का था उस मार्केट में, सभी एक ही तरह के शॉप हैं, एक ही एरिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम टाइप का है सभी शॉप्स में। तो उसका एक कंपैरिजन हमें मिला 1.52 करोड़ का, बी कंपैरिजन मिला 1.6 करोड़ का, सी कंपैरिजन मिला 1.55 करोड़ का। इनका हमने एडजस्टेड एफएमवी एडजस्टेड मीन निकाला इसका, तो दैट इज 1.56 करोड़। अब हमें इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच का दोनों का वेटेड एफएमवी कैलकुलेट करना है। इनकम अप्रोच का 60%, मार्केट अप्रोच का 40%। वेटेड एवरेज करेंगे। एफएमवी कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच मार्केट अप्रोच का वेटेड एवरेज करेंगे। इनकम अप्रोच हम कंसिडर करते हैं 60% उसका वेटेज है, और मार्केट अप्रोच का 40% वेटेज है। एफएमवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारी इनकम अप्रोच से वैल्यू थी 1.57 करोड़, उसका वेटेड हमारा वेटेज है उसका 60%, तो मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस हमारी मार्केट अप्रोच से वैल्यूएशन थी 1.56 करोड़। 1.56 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 40% वेटेज है उसका, मल्टीप्लाई बाय 0.4, then it will come out to be 1.565 crore. Outcome: sibling A pays 50% of 1.565 crore is equal to 78.25 lakhs to buy 100% ownership. अगर A और B दो ब्रदर हैं, तो A या A ब्रदर है, B सिस्टर है, तो A will pay, if A want to purchase that share, then he will pay 50% of 1.565 crore, that is 78.25 lakhs to B to purchase 100% ownership. This prevents disputes and ensures fairness. अगर आप इस तरह से वेटेड एवरेज निकालकर उसकी वैल्यूएशन देते हैं इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच से, तो उसमें डिस्प्यूट्स के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और फेयरनेस रहेगी। नाउ केस स्टडी नंबर 3, if you find any difficulty in solving this type of problems, then you may always contact on the phone number given on the official websites, helpline phone numbers given on the website to clarify all your doubts. Or you can also comment in the comment box and we will reply accordingly. If you find any difficulty or query or any question is there, then you can always type on in the comment box and we will try to answer all your questions. Now, case number 3. Trust dissolution and fair distribution of agriculture land. If it is an agricultural land, how to value this? A family trust. Now, the background of the case is a family trust in Gujarat holds 6 acres of agricultural land. एक फैमिली ट्रस्ट है, गुजरात में है, और उनके पास 6 acres of agricultural land है. The trust is being dissolved after 20 years. अब ट्रस्ट डीड के हिसाब से 20 years के बाद में ट्रस्ट को डिसॉल्व होना चाहिए, और डिसॉल्व करना चाहते हैं या ट्रस्ट उसके बाद जो बेनिफिशरीज हैं जो भी है उसके कंडीशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से 20 years के बाद उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं या डिसॉल्व होना है। एंड द लैंड मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द बेनिफिशरीज। और जो लैंड है 6 acres वो जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनमें डिवाइड होगी। अगर ट्रस्ट डिसॉल्व होगी तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो बेनिफिशरीज में इक्वली डिवाइड होगी। या
इक्वली डिवाइड होगी या फिर ट्रस्ट में जो परसेंटेज लिखी होगी उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका उस प्रॉपर्टी का हो जाएगा। वॉट एवर इज द प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, उसमें शेयर्स हैं, उसमें बैंक एफडीज हैं, एनी अदर अमाउंट है कुछ और, उसके टेंजेबल या इंटेंजेबल एसेट्स हैं, वो सब इक्वली जो उसमें ट्रस्ट डीड में परसेंटेज मेंशन है उसके हिसाब से उनमें डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। की इश्यूज आइडेंटिफाइड, मिक्स्ड लैंड क्वालिटी है, यहां पर जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर मिक्स्ड लैंड यूज है, पार्शियल इरिगेशन है, इरिगेशन पूरी तरह से नहीं है, पार्शियल इरिगेशन है, फ्रेगमेंटेशन रेस्ट्रिक्शंस अंडर स्टेट एंड स्टेट लैंड लॉज के हिसाब से वहां पर फ्रेगमेंटेशन रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये वी हैव टू स्टडी द रिलेटेड स्टेट लॉज एंड एज वेल एज the other municipal laws also, if situated property situated in the municipal area or municipal committee area or some panchayat area, then we have to take care of the state laws and other local bodies laws, rules and regulations. Then local market volatility. Valuation approach. Land valuation via comparable sale plus adjustments. कंपेरेबल लैंड सेल्स, देखिए मार्केट अप्रोच के हिसाब से जब भी आप वैल्यूएशन करेंगे तो आपको कंपेरेबल सेल मेथड से करना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसमें आपको कंपेरेबल्स आपको वहां से लेने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और साथ में उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए एक पूरा बड़ा वीडियो है जिसमें डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग केस स्टडीज दी हुई हैं, इसके लिए आप उसको व्यू कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूं। कंपेरेबल सेल मेथड के हिसाब से आप मार्केट अप्रोच की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, देयर इज अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, you may take benefit of viewing this, but in short we will discuss in short only for this topic comparable sale land sale। प्लॉट नंबर ए जो हमें वहां पर कंपेरेबल सेल इंस्टेंस मिला है, दैट वाज सोल्ड फॉर 32 lakhs पर एकड़, प्लॉट नंबर बी वाज सोल्ड 35 lakhs per acre, plot number C was sold 30 lakhs per acre. After adjusting irrigation and land assets, there are certain adjustments which is discussed in our second video. You can apply these adjustments. After applying the adjustments, the adjusted FMV comes out to be 33 lakhs per acre. Total land value is 6. Total land value will come out to be for 6 acres. 6 acre multiplied by 33 lakhs per acre is equal to 1.98 crore. Now distribution. Each beneficiary receive property or monetary value equal to 1.98 acre divided by 4. If there are 4 beneficiaries and the property is divided into the 4 among 4 beneficiaries in equal proportion, then it should be 1.9 crore divided by 4, it should be 49.5 lakhs. So what will be the outcome of this valuation? Trust dissolved successfully and with 0 disputes due to professional valuation and equitable allocation. Now benefits and limitations of family trust we have already discussed, but we will discuss once again. Valuer's perspective. In terms of valuer's perspective, benefits: protects access from debtors, reduces estate disputes, ensures smooth intergenerational transfer, enables tax efficiency structuring. Now limitations we have already discussed: require ongoing professional management, involves valuation, legal and tax expenses, compliances under MMR and Income Tax Act can be complex. Now, what are the key takeaways for this property valuation for family trust property? Family trust property valuation is a technical, legal, and fiduciary responsibility requiring professional expertise. Certified valuers, especially those are members of CEV and similar organizations, and also in some cases registered with IBBI, play a crucial role in ensuring the valuation. Transparency in ensuring
transparency, fairness, regulatory compliances, tax efficiency, and dispute prevention. The case study above highlight how expert valuation support informed decision making and protects family wealth across generations. Now, about the Council of Engineers and Valuers. Council of Engineers and Valuers is a premier professional body representing registered valuers, engineers, and technical experts across India. It actively contributes to the standard setting, professional training, and of knowledge in valuation, land administration, and fiduciary asset management. So friends, this is all from my side. Thank you for watching this video. On behalf of CEV, Council of Engineers and Valuers, I'm thankful to all of you to watch this video. Please do not forget to like, comment, and subscribe our official YouTube channel, Registered Valuers Club. This video is also available on www.cevnews.in. You can take the benefit of viewing this video, complete video, as well as related videos also on www.cevnews.in. Thank you very much. Good day. Goodbye.